Hello everyone, welcome to EduTap and welcome to the today's top 50 MCQs session on EduTap, in which I am going to discuss the top 50 general awareness MCQs from the month of August 2022. And guys, this is the part 5 of this particular series, so we are already done with the first 4 parts. If you have not seen it, kindly see it after watching this particular session. And guys, today's session is really going to be a very useful one for all the people who are basically preparing for the RBI Grade B, NABARD Grade A as well as the SEBI Grade A exam, और जो लोग नाबार्ड ग्रेड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं गाइस, उनके प्रीलिम्स एग्जाम के लिए ये सेशन इज रियली गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल. ठीक है, सो गाइस वी ऑल नो that in this session we are going to revise everything that we have covered in the fast track series in the form of MCQs, and that is the very most important method in order to revise and retain everything that you have covered in the past 1 week. ठीक है जी. So now before beginning the session guys, if you are new to our YouTube channel, kindly subscribe it and press the bell icon to receive all the latest updates of the courses and videos offered by us. And you can also join our Telegram channel to get the access to the PDF of the sessions. To join the Telegram channel, kindly click on the link given in the description below. ठीक है जी. तो before starting the session, there is a very important announcement for all of you that you are going to answer the questions in the comment section by referring to the question number and then the option that you think is correct as per your knowledge. ठीक है जी. Apart from that, you are also required to just update your scores. अपने scores calculate करते रहिएगा, because after seeing the session you are required to tell me in the comment section that what exactly your score was out of 50 in this particular session. So guys, आज का session काफी useful रहने वाला है. I am having a lot of challenges for all of you, and this is really going to be very useful for all of you for the NABARD Grade A exam phase 1. ठीक है जी. So let's begin the session with the very first question, which is here on the screen. So the question is on the One Nation One Fertilizer Plan. So you are required to tell me the name of the ministry which has implemented the One Nation One Fertilizer Plan. See guys, we have seen One Nation One Ration Card, One Rank One Pension. Now you can see here that One Nation One Fertilizer Plan. So what exactly the right answer to this question? The right answer is Ministry of Chemical and Fertilizers. So guys, basically what exactly here is, see, basically, with this particular initiative, Government of India wants to initiate single brand for all the fertilizers as well as the logo. That means there will be the single logo and the single brand for the fertilizers across India. ठीक है जी. और यहाँ पर आप देख सकते हो, it will be implemented under the प्रधानमंत्री भारतीय जनुर्वरक परियोजना. ठीक है जी. और यहाँ पर आप देख सकते हो कि किस तरीके से इस पर्टिकुलर योजना का एक लोगो भी यहाँ पर रहने वाला है. एंड दैट्स हाउ यू कैन सी हियर दैट व्हेन आई टॉक अबाउट दैट व्हाट एग्जैक्टली विल बी द ब्रांड हियर. सो फॉर एग्जांपल व्हेन आई टॉक अबाउट द डीएपी, ठीक है जी. सो जो डीएपी के बैक के ऊपर जो बाहर रहेगा, इट विल बी भारत DAP. So that is the Bharat brand. ठीक है. Similarly for the urea, it will be भारत यूरिया. तो आप यहां पर देख सकते हो कि किस तरीके से ये इसको basically implement करने वाले हैं. ठीक है. I hope that this is clear guys. Let's move on to the next question. And the next question, you are required to tell me what exactly is the additional amount of clean energy by 2026 that India is going to add as per the report, which is renewing wind growth to power the energy transition, India wind energy market outlook 2026. See guys, this is a very important part from the sustainable development and environmental issues. और इस तरीके की जितने रिपोर्ट्स हैं, उसका जो इंपॉर्टेंट डेटा है, फाइंडिंग्स हैं, और रिलीजिंग बॉडी कौन है, ऑल सच काइंड ऑफ थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. तो इस रिपोर्ट के अंदर यू आर रिक्वायर्ड टू टेल मी दैट इंडिया कैन ऐड एन एडिशनल डैश अमाउंट ऑफ क्लीन एनर्जी बाय 2026. एंड गाइस, हियर द राइट आंसर इज 23.7 गीगावाट. दैट इज द राइट आंसर. जब हम बात करते हैं कि इस रिपोर्ट को रिलीज किसने किया था, क्योंकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो रिलीज किसने किया था, दैट इज द ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल एंड MEC इंटेलिजेंस, ने इस रिपोर्ट को लॉन्च किया है. ठीक है जी. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, यू आर रिक्वायर्ड टू टेल मी द नेम ऑफ द बैंक व्हिच हैज टॉप्ड इन द मार्केट शेयर ऑफ द डेबिट कार्ड्स. ठीक है जी. डेबिट कार्ड्स के अगर हम मार्केट शेयर देखें तो उसके अंदर कौन सा बैंक है जिसने टॉप किया है एज पर द PGA लैब्स रिपोर्ट. तो PGA लैब्स ने एक रिसेंटली रिपोर्ट निकाली थी जिसमें उन्होंने बताया कि डेबिट कार्ड में जो सबसे हाईएस्ट मार्केट शेयर है वो कौन से बैंक का है. एंड गाइस, हियर द राइट आंसर टू द क्वेश्चन इज स्टेट बैंक ऑफ India, which is having 30% market share of the debit cards. And when I talk about the credit cards, so credit cards का देखें तो HDFC Bank है, which is having the 22% market share. Now guys, a very important thing, whenever you find the name of such kind of banks in the
options in the questions in the news, always seek out some information about that. For example, who is the chairman of that particular bank, ठीक है जी. apart from that उसके tagline क्या है, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल व्हेन आई टॉक अबाउट द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो उसके जो चेयरमैन है ही इज बेसिकली दिनेश कुमार खरा, ठीक है. सिमिलरली व्हेन आई टॉक अबाउट द पंजाब नेशनल बैंक, तो उसके जो चेयरमैन है दैट इज ए के गोयल. तो इसी तरीके से आपको याद रखना होगा सभी बैंक के चेयरमैन के बारे में, उसके टैगलाइंस के बारे में, बिकॉज अ क्वेश्चन कैन कम from this dimension as well. ठीक है. Moving on to the next question, guys. The next question is, once again you are required to tell me the name of the bank which has partnered with the Tata Neu to launch 2 co-branded credit card variants. ठीक है. तो Tata Neu एक ऐप है जिसके ऊपर ऑलरेडी एक क्वेश्चन आ चुका है सिडबी ग्रेड एग्जाम के प्रीलिम्स में. और गाइस जब हम बात करें इस पर्टिकुलर बैंक का जिसने कि यहाँ पर पार्टनरशिप किया टाटा न्यू के साथ टू लॉन्च co-branded credit card variants, so here the right answer to the question is HDFC Bank. So Tata Neu plus HDFC Bank credit card होगा और Tata Neu Infinity HDFC Bank credit card होगा, which they are going to launch in together. Moving on to the next question. So the Bank of Baroda Financial Solutions has partnered with Dash to launch a co-branded रुपए contactless credit card named योद्धा. तो ये जो योद्धा नाम का एक contactless credit card है, ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के साथ पार्टनरशिप में बैंक ऑफ बड़ौदा ने लॉन्च की है? दैट इज व्हाट यू आर रिक्वायर्ड टू टेल मी. इज इट इंडियन नेवी, एयरफोर्स, आर्मी, Indian Coast Guard or CRPF? So what exactly is the right answer, guys, here to the question number 5? The right answer is Indian Army. So guys, see, when you have seen that such kind of names are being mentioned here of the Indian Defense Forces, you are also required to remember who is the chief of these particular forces as well, because a question can be asked in the exam. So sorry, so when I talk about that what exactly who is the chief of the Indian Navy, so it is basically Admiral Hari Kumar. ठीक है. So when I talk about Indian Army, it is General Manoj Pandey. When I talk about Indian Air Force, guys, it is Air Chief Marshal Vivek Ram चौधरी. ठीक है. अब रिमेनिंग का आपको मुझे बताना है कमेंट सेक्शन के अंदर दैट हु इज द चीफ ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड एंड द सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्सेस. सो हियर यू कैन सी दैट ऑन व्हाट डायमेंशंस अ क्वेश्चन कैन आल्सो बी आस्क्ड इन द एग्जाम. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द PFRDA which has announced a trail commission of -% of the national pension system direct remittance contribution amount to be paid up to the point of presence from September 1, 2022. So what exactly is the percentage of that NPS direct remittance contribution amount जो कि पे किया जाएगा to the point of presence, और जिसकी टाइमलाइन भी आपको यहाँ पर याद रखनी है, that is 1st of September 2022. ठीक है. तो guys here the right answer to the question is option C, that is 0.2%. ठीक है. So POPS will get a minimum of ₹15 and maximum of ₹10,000. So these are the important things that you are required to remember from the exam point of view. Let's move on to the next question. Now the next question is, Bharti Telecom has announced that it is to set up to buy dash stakes of Airtel from the Singtel. So guys, when I talk about the Singtel, it is basically the name of the Singapore Telecommunications, and here Bharti Telecom ने यहाँ पर कहा है कि we are going to buy out the stakes of Airtel from Singtel. तो कितना परसेंट stakes लेने वाले हैं? That is what exactly you are required to tell me in the question, and here the right answer is 3.33%. और उसकी वैल्यू अगर हम बात करें सो इट इज 12,895 करोड़ रुपीस. ठीक है जी. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सी we all know that exams के लिए appointments are really very important. तो recent जितनी भी appointments हैं आपको याद रखनी चाहिए from the exam point of view, because such kind of questions are being asked in the exam. तो यहाँ पर question है कि which among the following has been appointed as the new MD and CEO of the SBI Securities. So we all know कि SBI Securities के recently एक person को MD and CEO appoint किया गया है. What is the name of that person? The name is Deepak Kumar Lalla, who has succeeded Naresh Yadav. See, whenever there is a kind of appointment, you are required to remember two names. The first one is ki who has been appointed, the person who will be assuming the charge, and the second important part is उन्होंने जिसको replace किया है. तो replace किसको किया है? नरेश यादव जी को. ठीक है. He has succeeded नरेश यादव जी
And the name of the person who will be assuming the charge, it is Deepak Kumar Lalla. Okay, let's move on to the next question. Now the question is on the MD and CEO of IDFC Limited. So guys, once again you can see that there is a question on the MD and CEO, and here the right answer to the question is Mahendra Shah, who has succeeded Sunil Kakkad. So once again guys, I'm telling you that these two important dimensions are there across which a question can be asked. The first one is the name of the person who assumes the charge, who takes the charge, and the second one is succeed किसको किया जा रहा है, किसको replace कर रहे हैं, that is the Sunil Kakkad. I hope this is clear. Let's move on to the next question. Now the next question is on books and authors. जब भी कोई book and author का आपके पास एक question आता है, there are two dimensions. First one is the name of the book. Second one जिसके ऊपर question आ सकता है, that is author. And most probably this is the part which is being asked in the exam. तो similarly जब हम बात करते हैं, it is a released book titled A New India Selected Writings 2014-2019. It is a compilation of the selected articles. See here there is a third dimension कि ये जो book है ये basically कौन सी personality के ऊपर based है. This can also be asked in the exam. जिस तरीके से यहाँ पर ये उस पर्टिकुलर पर्सनालिटी के आर्टिकल्स की बात कर रहे हैं, उसी तरीके से देयर कैन बी अ क्वेश्चन ऑन द ऑटोबायोग्राफीज कि ये जो ऑटोबायोग्राफी है ये किस पर्सन की है. ठीक है जी. सो हियर गाइस व्हेन आई टॉक अबाउट द राइट आंसर इज अरुण जेटली जी, जिनके ऊपर इस बुक को पब्लिश किया गया है, और पब्लिशर कौन है, जगरनॉट पब्लिकेशंस. सो दीज आर द इंपॉर्टेंट पार्ट्स गाइस. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द वर्ल्ड वाटर वीक. तो वर्ल्ड वाटर वीक के टाइम पर यहाँ पर एक इवेंट को ऑर्गेनाइज किया गया बाय द स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट. सो यू आर रिक्वायर्ड टू टेल मी दैट what exactly was the theme under which this event was being conducted. See guys, here whenever you see the important dates, आपको वहां पर क्या करना है इंपॉर्टेंट डेज में. वेरी फर्स्ट डायमेंशन इज द डेट्स, द सेकंड डायमेंशन इज what exactly is the theme of that part. So यहाँ पर जब हम बात करते हैं the question is basically on the theme, और जब हम बात करते हैं आंसर की, the right answer is seeing the unseen the value of water. That is the right answer. But when I talk about that what exactly the dates are here for the World Water Week, it is 23rd August to 1st September 2022. ठीक है जी. सो दिस इज द थिंग दैट यू आर रिक्वायर्ड टू रिमेंबर. वर्ल्ड वाटर वीक को सेलिब्रेट किया जाता है 23 अगस्त टू फर्स्ट वीक, और इस साल जो इवेंट हुआ उसकी थीम थी सीइंग द अनसीन द वैल्यू ऑफ वाटर. सो दीज आर द थिंग्स दैट यू आर रिक्वायर्ड टू रिमेंबर फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो इंडिया हैज साइंड 2 cooperation MOUs with which of the following nations to boost the MSME sector? See, whenever there is an MOU, you are always required to remember that there are two dimensions. First one is the party which is involved, and the second one is कि उसका एम क्या है. ठीक है जी. तो एम यहाँ पर आपको क्लियर है, टू बूस्ट द MSME सेक्टर. दैट इज व्हाई दिस MOU हैज बीन साइंड. और दो पार्टीज जो हैं, सी इंडिया इज द वन पार्टी, व्हाट एग्जैक्टली इज द अदर पार्टी, दैट इज बीइंग आस्क्ड इन द क्वेश्चन. एंड हियर गाइस द राइट आंसर टू द क्वेश्चन इज मॉरिशियस. सो व्हेनेवर, वंस अगेन गाइस आई एम टेलिंग यू, व्हेनेवर यू फाइंड एनी फॉरेन नेशन इन द न्यूज, यू आर रिक्वायर्ड टू रिमेंबर उसका स्टैटिक पार्ट एज वेल, कि उसकी कैपिटल क्या है, उसकी करेंसी क्या है, उसके प्राइम मिनिस्टर कौन है. फॉर एग्जाम्पल व्हेन आई टॉक अबाउट हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ मॉरिशस, इट इज मिस्टर प्रवीण जुगनॉथ. ठीक है जी. और इसी तरीके से जब हम बात करें कि उसकी कैपिटल क्या है, इट इज पोर्ट Lewis. So these are the things that you are required to remember from the exam point of view. So always make sure that you are covering these dimensions whenever you are covering these kind of news articles from the exam point of view. Now moving on to the next question guys. The next question is, you are required to tell me the name of the ministry which has notified the battery waste management rules 2022 to ensure environmentally sound management of the waste batteries. So guys, here you are just required to tell me the name of the ministry which has come up with this. See, बात हो रही है battery waste management rules की, तो कहीं ना कहीं अगर हम वेस्ट को मैनेज कर रहे हैं, दैट मींस इट इज रिलेटेड टू द एनवायरनमेंट, एंड दैट्स व्हाई द राइट आंसर विल बी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज. तो जब हम बात करते हैं कि यूनियन मिनिस्टर प्रेजेंटली कौन है फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, इट इज श्री भूपेंद्र यादव जी. ठीक है जी.
तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि किस तरीके से आपको अपने जो भी नॉलेज बेस है उसको आपको और ज़्यादा बेटर विथ प्रोवाइड करनी है। वो कैसे करेंगे? बाय सीकिंग आउट द एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अबाउट द थिंग्स दैट आर बीइंग प्रेजेंटेड टुवर्ड्स यू। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज बिकम द फर्स्ट to establish Atal Tinkering Lab in partnership with the Niti Aayog. So recently one of the state become the first state to establish Atal Tinkering Labs. ठीक है जी, तो Atal Tinkering Labs का अगर हम देखें कि what exactly was the aim of it, its aim was to foster curiosity, creativity and imagination in India's young minds. ठीक है जी, तो when I talk about the state which has become the first state, the right answer is Jammu and Kashmir, the first state in UT to establish Atal Tinkering Labs in partnership with the Niti Aayog, that is Jammu and Kashmir, and that is the right answer to this particular question. Let's move on to the next question, guys. Now the next question is the 20th edition of Bio Asia 2023. So you are just required to tell me the name of the state which has hosted this particular event, and the right answer is Telangana. और जब हम बात करते हैं ऐसे किसी मेजर इवेंट की, तो उसकी थीम क्या थी, वो कहां पर हो रहा है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. कहां हो रहा है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, दैट इज इन हैदराबाद, तेलंगाना. एंड व्हेन आई टॉक अबाउट द थीम इज एडवांसिंग फॉर वन शेपिंग द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ ह्यूमनाइज्ड हेल्थ केयर. सो हियर गाइज यू कैन सी हियर दैट व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड इन द एग्जाम, एंड दैट इज व्हाई यू आर रियली रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर them very well. Moving on to the next question. So the next question is, you are required to tell me the name of the state which is announced to set up Indo-Israel Center of Excellence for the vegetables to source planting materials for fruits and vegetables in the protected cultivation. So here once again guys you can see that Israel is in the news. तो इजराइल की मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि आपको क्या क्या चीजें याद रखनी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल व्हेन आई टॉक अबाउट द कैपिटल ऑफ इजराइल, इट इज जेरूसलम. ठीक है जी, और जब हम बात करते हैं कि उसके प्राइम मिनिस्टर कौन है, इट इज Yair Lapid, who is presently the Prime Minister of Israel. तो जो हम बात करें what exactly the name of the state जहां पर ये इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल्स को सेटअप किया जाएगा, द नेम ऑफ दैट स्टेट इज उत्तर प्रदेश. और यहाँ पर है उसका जगह का नाम, दैट इज चंदौली, उत्तर प्रदेश. ठीक है जी, सो दैट इज द राइट आंसर. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज रिसेंटली लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल इकोसिस्टम नेम्ड ऑल थिंग्स ईवी. तो यहाँ पर मुझे जल्दी बताइए इसमें से किसने इसको लॉन्च किया है, दैट इज इंडियाज फर्स्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल इकोसिस्टम जिसका नाम है ऑल थिंग्स ईवी. तो ऑल थिंग्स ईवी आपको ये याद रखना बहुत जरूरी है क्योंकि इंडिया का ये पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल इकोसिस्टम है. एंड व्हेन आई टॉक अबाउट द राइट आंसर is option A, HDFC ERGO General Insurance. Moving on to the next question. Now tell me the name of the organization जिसने collaborate किया है टाटा पावर्स रिन्यूएबल माइक्रोग्रिड के साथ. What exactly was the aim of this collaboration? That is to develop an innovative program which is going to establish 1,000 green energy enterprises across India. So is it SEBI, SIDBI, RBI, NABARD and NHB? That is what you are required to tell me. So ऐसे जब भी कोई collaboration होता है, you are always required to remember the name of the parties जिनके बीच में ये collaboration हुआ है. And when I talk about the right answer to this question, it is SIDBI. So guys, SIDBI की जब हम बात करें तो SIDBI established कब हुआ था? See, whenever you find such kind of organizations, you are always required to remember to seek out the extra information about them. तो जब हम SIDBI की बात करते हैं, it was established in 2nd April 1990. ठीक है, अगर हम बात करते हैं इसके हेडक्वार्टर की, इट इज हेडक्वार्टर्ड इन लखनऊ. और जब हम बात करते हैं इसके चेयरमैन की, इट इज एस रमन. ठीक है जी, तो हमने तीनों चीजें पढ़ी सिडबी की. दैट इज एस्टैब्लिश कब हुआ? 2 अप्रैल 1990. हेडक्वार्टर है लखनऊ के अंदर, चेयरमैन है एस रमन. सो दैट इज व्हाट यू आर रिक्वायर्ड टू रिमेंबर फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एमओयू साइन किया है इसमें से कौन सी कंट्री के साथ टू फैसिलिटेट स्मार्ट एंड सस्टेनेबल एविएशन टेक्नोलॉजी. सो गाइस क्विकली टेल मी व्हाट इज द राइट आंसर इन द कमेंट सेक्शन. एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ये एमओयू इसमें से कौन सी कंट्री के साइन किया है? द राइट आंसर इज स्वीडन. तो स्वीडन ने किया है. स्वीडन के कैपिटल, करेंसी, प्राइम मिनिस्टर जो भी हैं मुझे बताइए कमेंट सेक्शन के अंदर. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज tell me the name of the bank which is announced to pick around 9.994% stakes in the Go Digit Life Insurance Limited. So Go Digit Life Insurance Limited के अंदर जो stakes है उसको pick करने वाला है ये बैंक. And what exactly the name of that bank? Guys, the right answer is HDFC Bank. ठीक है जी, तो HDFC Bank है इस क्वेश्चन का सही आंसर. बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ. Now you are required to tell me the name of the first airline in India. See, what exactly is making this more important?
this particular word, that is first airline. तो मुझे बताइए the name of the first airline in India to use AI powered CAE rise training system. So उस एयरलाइन का नाम क्या है? The right answer is Air Asia India, जिसने की जो बनी है हमारी फर्स्ट एयरलाइन इन इंडिया टू यूज AI पावर्ड, दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड CAE rise training system. ठीक है जी. Now moving on to the next question. So CII has signed an MOU at which of the following states to collaborate and unleash the potential of entrepreneurial talent of that state. See guys, once again I am telling you कि जब भी आपको कोई MOU मिलता है उसकी दो चीजें इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट वन इज द पार्टी एंड द सेकंड वन इज व्हाट एग्जैक्टली इज द एम ऑफ दैट MOU. तो दो पार्टीज आपकी कौन सी हैं ये आपको मुझे बताना है, और उसकी एम क्या है, दैट इज ऑलरेडी मेंशन, दैट इज द पोटेंशियल ऑफ एंटरप्रेन्योरल टैलेंट ऑफ दैट यूथ. उसको अनलीश करने के लिए ये पर्टिकुलर स्टेप लिया गया है, ये कोलैबोरेशन की गई है. तो जब हम बात करते हैं उस स्टेट के जिसके लिए लॉन्च किया गया है, दैट इज बेसिकली नागालैंड, विच हैज साइंड दिस CSR एंड इन्वेस्टमेंट कॉन्क्लेव 2022, जो कि यहाँ पर हमारा नागालैंड में अभी रिसेंटली हो रहा है. और उसकी थीम क्या है? पार्टनरशिप्स फॉर स्ट्रेंथनिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट. तो ऐसे कभी भी जो कॉन्क्लेव्स होते हैं उस दौरान कुछ MOU साइन किए होते हैं, वो किसके साथ किया जाता है, दैट इज really very important to be remembered by you from the exam point of view. Moving on to the next question guys, which of the following states has launched state level credit guarantee scheme to help MSMEs? तो वो कौन सी स्टेट है जो इसको लॉन्च करने वाली है? सो गाइज मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि ये जो स्टेट है इट इज गोइंग टू वर्क अलोंग द सेंट्रल CGT MSE स्कीम. ठीक है जी, सेंट्रल गारंटी ट्रस्ट मीडियम स्मॉल एंटरप्राइजेस, ठीक है, जिसके लिए हमने इसको लॉन्च किया है. और जब हम बात करते हैं उस पर्टिकुलर स्टेट की, द स्टेट ऑफ द नेम इज दैट इज बेसिकली तमिलनाडु. सो द स्कीम वाज लॉन्च एट द रीजनल MSME मीट इन तिरुपुर, तमिलनाडु. अब इस स्कीम के अंदर होगा क्या? सी, इट इज गोइंग टू एक्सटेंड 90% गारंटी फॉर द एलिजिबल लोन्स अप टू 40 लाख. सी, जो भी लोन 40 लाख तक के होंगे उसके लिए 90% गारंटी देगी, ठीक है. बट जो लोन होंगे हमारे 40 लाख से 2 करोड़ के बीच में, दैट इज मोर देन 40 लाख एंड लेस देन 2 करोड़, उसके लिए जो गारंटी दी जाएगी दैट विल ओनली बी 80%. एंड दैट इज व्हाट इज आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर यू टू रिमेंबर फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर गाइस. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, यू आर रिक्वायर्ड टू टेल मी द नेम ऑफ द कंट्री व्हिच इज बीइंग डिफीटेड बाय इंडिया टू क्लिंच ब्रॉन्ज एट द एशियन मेंस अंडर 18 वॉलीबॉल चैंपियनशिप. एंड हियर द राइट आंसर इज ऑप्शन ई, दैट इज साउथ कोरिया. ठीक है जी, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Now you are required to tell me world's first hydrogen powered train fleet which was inaugurated in which of the following nations. वो कौन सी कंट्री है जहां पर वर्ल्ड की पहली हाइड्रोजन पावर्ड ट्रेन फ्लीट को लॉन्च किया गया है? गाइस, द राइट आंसर टू द क्वेश्चन इज जर्मनी. और जब हम बात करते हैं जर्मनी की, तो उसके प्रेजेंटली चांसलर कौन है? दैट इज ओलाफ शोल्ज. ठीक है जी. और इसी की तरह हम जब बात करें जो कि रिसेंटली न्यूज में था, दैट इज द फॉर्मर चांसलर ऑफ जर्मनी, दैट इज एंजेला मर्कल. She has been recently announced as the winner of UNESCO Peace Prize. ठीक है, तो ये चीजें हैं जो आपको याद रखनी है, ये करंट अफेयर्स है, इस तरीके से आपको लिंक करना है. दैट इज व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी रिमेंबर्ड फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस. सो इंडिया हैज साइंड अ कंसल्टेंसी कॉन्ट्रैक्ट विद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नेशंस फॉर 2 रेलवे प्रोजेक्ट्स. तो इंडिया ने रिसेंटली कंसल्टेंसी कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है फॉर 2 रेलवे प्रोजेक्ट्स. कौन सी कंट्री के साथ किया है और किस लिए साइन किया है? दैट इज टू एनहांस क्रॉस बॉर्डर गुड्स मूवमेंट. और वो कंट्री कौन सी है जिसके साथ साइन किया है? Here it is बांग्लादेश, जिसके साथ इसको साइन किया गया है. ठीक है जी. Now the next question is, as per the recently released quarterly statistics on deposits and credit of the scheduled commercial banks for June 2022, which is released by the Reserve Bank of India, the bank credit growth has increased to -% in Q1 fiscal 2023. So guys, यहाँ पर आपको मुझे बताना है as per this report what exactly was the bank credit growth in the very first quarter of the financial year 2023, and the right answer is 14.2%. ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो NMDFC has recently signed an MOU with one of the banks, और उसका एम क्या है? टू डेवलप फाइनेंशियल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर एंड मोबाइल एप्लीकेशन. एंड गाइस, here the name of that bank with which this MOU has been signed is
आईसीआईसीआई बैंक। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि किस तरीके से बैंक्स की न्यूज़ हैं जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जो हमारा पार्ट बनती है जनरल अवेयरनेस का। ये जो एमओयू साइन होते हैं, ये जो रिपोर्ट साइन होती है और ये जो स्कीम्स लॉन्च हो रही हैं गाइस, इन सभी से आपके पास क्वेश्चंस आने वाले हैं एग्जाम के अंदर। सो काइंडली कवर देम वेरी वेरी केयरफुली एंड वेरी कॉम्प्रिहेंसिवली, जिससे कि एग्जाम में आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। So the next question, you are once again required to tell me the name of the bank. Recently, one of the banks, that is Kochi Metro Rail Limited, ने collaborate किया है इनमें से किसी एक बैंक के साथ in order to launch Kochi One Card for the Onam among the metro commuters. तो जो metro commuters हैं उनके लिए Kochi One Card को launch किया गया है। उसके लिए कौन से बैंक के साथ collaboration किया है, that is what you are required to tell me, and the name of the bank is A for Axis Bank. ठीक है जी, so that is what the right answer is. Moving on to the next question. So the next question is, as per the recent data, government e-marketplace portal has procured over rupees 8200 crore worth of products and services since its inception. And see guys, a very indirect question has been put on by this particular part, but यहाँ पर आपको देखना है कि बेसिकली वो डिमांड क्या कर रहा है। सी आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर गवर्नमेंट ई मार्केटप्लेस पोर्टल की बात की गई है और एक डेटा प्रोवाइड किया गया दैट इज रिलेटेड टू द करंट अफेयर्स कि एज पर दिस पर्टिकुलर रिसेंट डेटा विच वाज रिलीज्ड, जीएम पोर्टल ने प्रोक्योर किया है ओवर 8200 करोड़ वर्थ ऑफ प्रोडक्ट्स, जहां से इस पोर्टल से इतने वर्थ के प्रोडक्ट्स को प्रोक्योर किया गया है। बट यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछता है कि वो उसका इंसेप्शन कब हुआ था, मतलब कि उसको लॉन्च कौन से ईयर में किया गया था जीईएम को। दैट इज व्हाट इज बीइंग आस्क्ड इन द क्वेश्चन, a very basic question. See how it can be related, how the static part can be related from the current affairs part. तो आपको यहाँ पर सारे डायमेंशंस को कवर करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं लॉन्च ईयर की, इट वाज लॉन्च्ड इन ईयर 2016, दैट इज व्हाट यू शुड रिमेंबर। Okay, moving on to the next question guys. Now tell me the name of the Indian Defense Force which has received the first ever indigenously developed 30mm gun ammunition. Once again a very important part guys, जब भी ऐसा आपको दिखता है कोई वर्ड एग्जाम के अंदर या फिर किसी न्यूज़ के अंदर गाइज, ऑलवेज कवर इट कॉम्प्रिहेंसिवली, क्योंकि ऐसी जो न्यूज़ आर्टिकल्स हैं दे अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ द एग्जामिनर एज वेल एंड दैट्स व्हाई दे हैव वेरी हाई प्रोबेबिलिटी टू बी आज इन द एग्जाम। कोई भी चीज़ पहली बार हो रही है, इट रियली बिकम्स इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो रिसीव्ड फर्स्ट ever indigenously developed 30mm gun ammunition. The right answer is option E, that is Indian Navy. Develop किसने किया है, Economic Explosives Limited ने। Next question guys, now tell me that who among the following has won the Athlesima Wanda Lotion Diamond League 2022 title, and he is basically the person who has made the whole India pride during the Olympics as well. The right answer is Neeraj Chopra. Moving on to the next question guys, now tell me the name of the state which has signed an MOU with the Parley of the Oceans to save seas from the pollution. तो seas को pollution से बचाने के लिए एक MOU साइन किया, that is Parley from the Oceans, and what exactly the name of that state? It is Andhra Pradesh which has signed this MOU with the Parley with Oceans. Moving on to the next question, now once again a book has been mentioned, you are just required to tell me the name of the author of that book. Book का नाम क्या है? The name of the book is India's Economy from Nehru to Modi, a brief history, and guys here the name of the author is पुलापरे बालकृष्णन and the publisher is Permanent Black. See, publisher बहुत ही rarely पूछा जाता है, but ऑथर का नाम इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये याद रखिएगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द वुमेन्स इक्वालिटी डे। यू आर रिक्वायर्ड टू टेल मी द डे, द डेट ऑन विच दिस पर्टिकुलर डे इज बीइंग सेलिब्रेटेड अक्रॉस द वर्ल्ड। सो गाइस क्विकली टेल मी व्हाट इज द राइट आंसर हियर। द डेट ऑन विच द वुमेन्स इक्वालिटी डे इज बीइंग सेलिब्रेटेड, इट इज on 26th of August. ठीक है जी, let's move on to the next question. Now the next question is, which of the following entities has organized the Millet Conclave 2022? See guys, I am marking the star here. This is a very very important question for the NABARD Grade A exam. ठीक है जी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मिलेट कॉन्क्लेव 2022 रिसेंटली किसने ऑर्गेनाइज किया गया था अलोंग विद द यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज रायचूर कर्नाटका, जहां पर मिलेट चैलेंज वाज अनाउंस फॉर द स्टार्टअप्स। इसको अनाउंस किया था मिसेस निर्मला सीतारमन ने, द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। सो व्हेन आई टॉक अबाउट द राइट आंसर इज नाबार्ड ओनली। ठीक है जी, तो नाबार्ड ने इसको लॉन्च किया है। व्हाट एग्जैक्टली वाज द थीम ऑफ द कॉन्क्लेव? इट वाज making many millet magnets, making many millet entrepreneurs. Millet challenge will be administered by the Atal Innovation Mission of the Niti Aayog. See guys, once again नाबार्ड है, तो नाबार्ड के बारे में आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए। वो एस्टेब्लिश कब हुआ था? दैट इज 12th of July 1982। ठीक है जी, उसके अलावा उसके चेयरपर्सन कौन है? दैट इज श्री JR चिंतला जी।
तो ये सब चीजें आपको याद रखनी है फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. आई होप दिस इज क्लियर. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज once again on a very important note, that is talking about the world's largest religious monument. So whenever you are finding such kind of word, mark the न्यूज एज अ स्टार बिकॉज इट कैन बी आज इन द एग्जाम. तो यहाँ पर द टेम्पल ऑफ वैदिक प्लेनेटेरियम विच इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिलीजियस मॉन्यूमेंट, ये कौन सी स्टेट के अंदर होगा, दैट इज व्हाट यू आर रिक्वायर्ड टू रिमेंबर हियर. तो यहाँ पर व्हेन आई टॉक अबाउट द नेम ऑफ द स्टेट, इट इज वेस्ट बंगाल. सी गाइज, whenever such kind of thing is being launched, you are always required to remember कि इंडिया जैसे वर्ल्ड का जो सबसे बड़ा चीज है वो कहाँ पर होने वाला है, व्हाट एग्जैक्टली इज द लोकेशन, या फिर व्हाट एग्जैक्टली द नेम ऑफ द पर्सन हु हैज बिकम द फर्स्ट पर्सन टू डू समथिंग अक्रॉस द वर्ल्ड. सो दीज आर द थिंग्स दैट यू आर ऑलवेज रिक्वायर्ड टू रिमेंबर फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है. सो हियर सम additional information has been mentioned. You can go through them on your own. Let's move on to the next question. So as per the recent report by the Binary Knowledge, India is now on the dash position. That is, India is the dash largest life insurance market with a global average of 3.3%. You are just required to tell me the name of the rank. What exactly, not the name, that is, but the rank of India in this particular part, that as per the report by Binary Knowledge, India के अंदर, India is basically what largest insurance market. ठीक है जी, it's first, it's 8th, 10th, 12th and 15th, and the right answer is 10th. So India is the 10th largest insurance market across the world. Now moving on to the next question guys. Now the next question is, you are required to tell me the name of the mutual fund जिसने लॉन्च किया है मनी एंड मी वेबसाइट एंड अ कंज्यूमर अवेयरनेस कैंपेन, दैट इज आपका हैप्पीनेस प्लान टू प्रमोट द मनी एंड मी इनिशिएटिव. सो व्हाट एग्जैक्टली इज द नेम ऑफ दैट म्यूचुअल फंड? इट इज PGIM इंडिया म्यूचुअल फंड विच हैज लॉन्च द मनी एंड मी वेबसाइट. ठीक है. नाउ वन ऑफ द इंडियन बैंक्स हैज पार्टनर्ड विद द NPCI. ठीक है. और क्यों किया है? टू लॉन्च द रुपे क्रेडिट कार्ड. सो यू आर रिक्वायर्ड टू टेल मी द नेम ऑफ दैट बैंक विच हैज partnered with the NPCI, and the bank is ICICI Bank, which has partnered with the NPCI. Now the next question guys, Tata Steel has linked an MOU with which of the following states to set up a steel plant in that state. So recently Tata Steel ने एक MOU sign किया एक state के साथ जिसके अंदर they are going to set up a steel plant. What is the name of the state? The name of that state is Punjab. Let's move on to the next question. So the next question is once again guys a very important part. Here you can see first Divyang Park for the Divyangjan under the Assistance of Disabled Person scheme of the Ministry of Social Justice and Empowerment. This particular park has been set up and this is the first such kind of park for that particular state. And what is the name of that state? The state is Maharashtra. ठीक है जी. Moving on to the next question guys. The next question is, who among the following has been appointed as India's executive director at the International Monetary Fund? So guys, IMF is once again a very important organization, and when I talk about IMF guys, उनके जो director हैं is Kristalina Georgieva. When I talk about the deputy managing director, it is the person from the India, that is Geeta Gopinath ji. And when I talk about the chief economist of the International Monetary Fund, it is Mr. Olivier Pierre Gorinchas. ठीक है जी. So these are the name of the people that you should remember from the exam point of view. When I talk about the person who has been recently appointed, he is basically Dr. Krishnamurthy Subramanian. ठीक है जी, who is going to replace Surjit S. Bhalla as the executive director at the International Monetary Fund. Moving on to the next question. National Sports Day is being celebrated on किस डे? किस डेट को सेलिब्रेट किया जाता है? See, it is basically celebrated to commemorate the birth anniversary of India's hockey legend, that is श्री मेजर ध्यानचंद जी. ठीक है जी. तो यहां पर आपको मुझे बताना है कि डेट जिसके दिन नेशनल स्पोर्ट्स डे को हम सेलिब्रेट करते हैं, एंड द डेट इज 29th of August. ठीक है. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट 2022. सो क्विकली टेल मी व्हाट इज द डेट ऑन विच दिस पर्टिकुलर डे इज बीइंग सेलिब्रेटेड. गाइज, इट इज 29th of August. ठीक है जी. Moving on to the next question. Now the next question is, you are required to tell me the name of the forces which has launched Operation Yatri Suraksha for the safety of passengers traveling via Indian Railways. तो क्या जब हम बात करते हैं Indian Railways की, तो obviously कोई force which will be associated with the railways will be the right answer, and that is absolutely right. That is Railway Protection Force. Now
नाउ यू आर रिक्वायर्ड टू टेल मी द नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जिसके साथ क्लाउड एक्सटिल ने पार्टनरशिप की है. व्हाट एग्जैक्टली द एम ऑफ दैट पार्टनरशिप? इट इज टू लॉन्च इंडियाज फर्स्ट शेयर्ड रेडियो एक्सेस नेटवर्क सॉल्यूशन फॉर द कंजेस्टेड लोकेशंस. एंड हियर गाइस द नेम ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन इज रेलटेल, जिसके साथ ये पार्टनरशिप की है टू लॉन्च इंडिया का पहला शेयर्ड रेडियो एक्सेस नेटवर्क सॉल्यूशन. सी गाइस, दिस इज बेसिकली making this question a very important to be remembered. Now the next question. So the Ministry of Defense has approved a guided rocket for the Pinaka weapon system designed and developed by DRDO. और आपको मुझे बताना है it is going to enhance the firepower of which of the following defense forces. कौन सी defense forces को ये दिया जाएगा जिससे उसके फायर पावर को हम और ज़्यादा enhance करने वाले हैं? That is the Pinaka weapon system. And guys, here the name of the defense force is Indian Army. तो इन सभी के चीफ्स को हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है अपने सेशन के अंदर. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following nations will host 7th women's under 17 FIFA World Cup? See guys, we all know कि ये जो कंट्री है जो इसको होस्ट करने वाली है उसके ऊपर रिसेंटली बैन लगाया गया था और उसके बाद उसको लिफ्ट किया गया है. सो व्हाट एग्जैक्टली द नेम ऑफ दैट कंट्री इज? इट इज आवर लवली इंडिया. सो इंडिया इज गोइंग टू होस्ट द 7th women's under 17 FIFA World Cup. Moving on to the next question, guys, and this is the last question of our today's session, and the question is, you are required to tell me that which of the following entities has signed an MOU. Whenever there is a MOU, there are some parties. और उसका aim क्या है? The aim is for the swift development of modern multi-modal logistic park. तो यहाँ पर ये MOU किस-किसने sign किया है? For the swift development of modern multi-modal logistic park, that is what you are required to tell me here. And guys, here when I talk about the right answer is all A, B and C, that is the National Highway Logistic Management Limited, Inland Waterways Authority of India and the Rail Vikas Nigam Limited, जिसके साथ इस MOU को साइन किया गया है for the swift development of modern multimodal logistic park. So guys, that was the end of the session. I really believe that today's session was useful and fruitful to all of you. If you are having any queries, what you can do, you can comment your queries in the comment section. You can also share your queries on hello@edutap.co.in, and you can also call us at 814-620-7241. Okay guys, I really believe that this session was really fruitful and useful to all of you, and you have really enjoyed this particular session. And do not forget to tell me your scores in the comment section below. ठीक है, comment section में अपने स्कोर्स बताना मत भूलिएगा. एंड गाइस, वी ऑल विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द नाबार्ड ग्रेड ए फेज 1 एग्जाम.